change something. It is saying that the clean energy is electricity that does not create any greenhouse gases during its production, although it is not necessarily renewable, like nuclear energy. It is considered hydro energy also as a clean energy. So there is difference, na? So you will have to focus on clean energy means hydro as well as renewable nuclear energy. तो दोनों में फर्क हो गया ना. So without focusing on nuclear or hydro, question just reverse. And in that situations, everybody will try to write about the water energy, wind energy, solar energy, and all will be considered in clean energy. But whosoever is smartly telling that the clean energy is electricity that does not create any greenhouse gases or any emissions of pollutants is called clean energy, like nuclear energy. Clean energy may not necessarily renewable, but others are all are renewable. दूसरा, hydro energy should be considered in a clean energy because there is no emission of any greenhouse or any pollutants, but that is not renewable. It might be कि पानी सूख जाए, it might be कि पानी reservoir could get dry. There is two methodology of hydro energy creations. One is the making dam and another is the drawing the water from the river by the slanting manner directly without making any reservoir. Both are the methodology which is being used. That was in the news of Hindu. The question will certainly come on this. And the second opinion was that hydro energy is much more sustainable for the India because the exploitation of hydro energy is only up to the 13-14%, where the America has exploited it 86-90%. So there is an enormous scope in India to create hydro energy because the level of generation is only 13% of the total parts of the electricity generation. So this is the new concept which is being focusing by the ministry, that it is also a clean energy. Renewable might be not possible, but the making reservoirs, it can be a certain in the 24/7 in a year production. Clear है ना? So now you will have to focus on clean energy. Clear है? नहीं करते. उसका रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड दैट कि देयर इज अ वेरी कॉस्टली प्रोडक्शन सिस्टम. कैसे कॉस्टली क्यों होता है वो? पहली बात तो रॉ मटेरियल इज नॉट इजीली अवेलेबल इन द कंट्री. दैट इज द थोरियम. वेयर यू गेट थोरियम? केरला. from which products you are getting thorium? That is the sand. बालू से. बालू में होता है. तो बालू से निकालना, बालू से तेल निकालने वाली बात है. एक तो इसका है. अच्छा, थोरियम, मोनाजाइट. तो पहला तो उसका जो है रॉ मटेरियल टफ है. एग्जैक्टली. उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना बहुत कॉस्टली है. आपको कितनी कोबाल्ट की छड़ें लगानी पड़ती है, आप समझिए दीवार कितनी मोटी होती है. और उसके बाद जब आप बम्बार्डमेंट यहाँ थोरियम पे करते हैं तब क्या हाल होता है? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है. कंट्रोल नहीं कर सकते आप उसको. सपोज ये फटा तो गए 200-500-1000 किलोमीटर के रेडियस में गया. 1000 किलोमीटर है, पता नहीं कितना है, लेकिन 200-400 किलोमीटर तक तो इफेक्ट कर ही देगा. हाँ. तो जब इस पे बम्बार्डमेंट होता है इलेक्ट्रॉन की थोरियम पे, तो आप तो साइंस वाले हैं, सोचिए क्या स्थिति होती है यहाँ पे.
हैजार्डस है फिर भी इसको से क्लीन एनर्जी में क्यों इसलिए क्योंकि हाँ, दिस इज द क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द creation of electricity, generation of electricity, it does not make any pollutions in the society because the wall is so strong, even that the radiation could not get out. अरे भाई, उसका साइड इफेक्ट है ना कि once it gets disrupted, then it will be the problematic. That's why the government, the world is not focusing on this. Not anything, not affect a single any creatures, no any side effects. हर चीज का साइड इफेक्ट है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट का डायरेक्ट इफेक्ट तब होगा, नो साइड इफेक्ट, दैट इज द डायरेक्ट इफेक्ट वंस इट गेट्स एक्सप्लोड। पटाखा तभी तक सुरक्षित है जब तक वो फट नहीं जाता। ओके तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूं भैया, आपको मैं क्यों बता रहा हूं, वाई आई एम टेलिंग दिस सच्चाई एंड वाई आई एम ट्राइंग टू डिफरेंशिएट यू अमॉन्ग्स ऑल अदर मेंस राइटर, बिकॉज दिस इज द डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस विल मेक यू IAS. You are absolutely right. The second point you are correctly saying that nobody is going to make this clean energy in such a way, and I am advocating that not my own perception, not my own prejudice. It is taken from the report of climate change, and this is the second story. One of my batchmate was director in Ministry of External Affairs, Ministry of Forest and Climate Change, and he always used to represent India in any climatic change convention. And the situation is so good or bad कि after 1-2 years he always refused to go to the seminar. अरे यार मैं नहीं जाऊंगा यार, किसी और को भेज दो. So he used to say कि what is going on there. So that term was also used in that seminar. The report is publishing in such a manner. तो आप सही कह रही हैं कि कोई शायद ही कोई होगा जो इसको ऐसे लिखेगा, बाकी तो आसान है भू राजनीति के संदर्भ में। तो ये देखिए, मैं बार बार जो रिपीट करता हूं कि मार्केट इज अ वेरी वेरी वास्ट, market is flourish from with all the materials and this and that, but who is bothering ki what you have to write? Nobody is bothering यार। यूथ सिलेक्शन हो या ना हो, तुम बाहर में जाओ। कोचिंग को कोई मतलब है इससे? आज मैं एक का वीडियो देख रहा था, कह रहा कि शादी से पूर्व सेक्स जो है सही है या गलत, उस पर भाषण दे रहा है, और रिनाउंड आदमी। What is the use to make reel on such subject यार? उससे बढ़िया एक क्वेश्चन ही बना देते उसी पे। तो मार्केट इज फ्लोरिश विद द सो मेनी एनॉमलीज एंड द हिटिंग पॉइंट ऑफ आई ऑफ फिश इज नोबडी गोइंग टू टेक केयर। तो आफ्टर दैट क्लीन एनर्जी, यू विल हैव टू डिफाइन क्लीन एनर्जी। दिस इज द डेफिनेशन टेकन फ्रॉम दैट रिपोर्ट की clean energy is electricity that does not create any greenhouse gases during its production, although it is not necessarily renewable. Clear है? Example, nuclear energy, hydro energy. Why clean energy is demand of the day? Because no greenhouse gas emission, no dependency over limited fossil fuels. ये सब लिखेंगे। Less global warming, inexhaustive energy, reliable and resilience. This is the feature of clean energy. और भी पॉइंट है, स्टेबल, इसको आप फोटो खींच लेना यार, है ना। तो स्टेबल एनर्जी, सेव एंड मेक मनी, प्रोवाइड जॉब फॉर लोकल, इकोनॉमिक जस्टिस बाय रिड्यूसिंग एनर्जी पॉवर्टी एंड पॉलिटिकल फंडामेंटल राइट, ऑल दिस टू बी इनकॉर्पोरेटेड, that is also required. Decrease carbon footprint, such type of terminology to be used. Social inclusion along with inclusive growth,
that type of terminology to be used, climate sustainability, improved public health and carbon credit. So that is the feature of even renewable energy or clean energy. Almost 2-3 points of the further. आपको स्मार्टली क्लीन एनर्जी की डेफिनेशन जब लिखेंगे तो उसमें एग्जाम्पल दे के लिख देंगे. जब वो पढ़ेगा इन इनिशियल, when examiner will read that although it is not necessarily renewable. हाँ हाँ renewable. So he or she will feel the difference of the others. तो ये आपको ऊपर ही जब डेफिनेशन लिखेंगे क्लीन एनर्जी में तो उसमें डाल देंगे, तो समझ जाएगा ना कि देयर इज डिफरेंशिएशन मेड बाय दैट एस्पिरेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिन्यूएबल और नॉट रिन्यूएबल. क्लियर है? तो नेचुरली ही विल गिव मोर मार्क्स एंड आफ्टर दैट योर फोकस शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ क्लीन रेदर देन ऑल अदर. क्लियर है? ओके गुड. ओके देखो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो दैट इज कॉमन, एवरीबडी नोज. डिस्कस द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द मॉडल कोड. कॉमन क्वेश्चन, एवरीबडी. A smartly question setter makes the question setting in such a way कि 30% question will be complex. Yes, so that 30% will be the decisive factor for your selection. Otherwise 70% question is common. Only 30% demands your own originality, your own creativity. If you are not getting that 30% in the right spirit, then you will be at the same pedestal of 50% or 45%, and only 2-3 questions, that is the greater chunk here. 30% is, and that questions will decide your merit, your selection, nothing more. Yes, yes, yes. तो उसको थोड़ा सा घुमाएगा so that you become. ऑल दीज क्वेश्चंस आर सिंपली. अगर आप इसको 20 क्वेश्चन में देखें कि विच वन इज द टफेस्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, याद रखना फर्स्ट. उसके बाद दिस इज नॉट सो कॉम्प्लेक्स बट लिटिल बिट, इसे छोड़ दो. हाँ ये दूसरा है थोड़ा, but this is not so complex but it is complex. Yeah, 4, that is the case study. Yes. Yeah, 6th is a real complex. The complex was first and 6th. 2, 3, 4, 5 is not complex. इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चंस को समझना is tough because it is talking about connectivity. The goal of connectivity, what does it mean? Nobody can easily grasp what does he or she wants to say. Connectivity. To whom connectivity? किससे कनेक्ट होना है? बाकी ठीक है, बाकी गति शक्ति योजना needs meticulous coordination between the government and the private to achieve the goal of connectivity. This term cannot be easily understandable. तो सेकंड क्वेश्चन इज दिस. आगे चलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ. ठीक है, हाँ ये 16 इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स. वेलफेयर स्कीम्स, इन्फ्लेशन एंड दिस एंड दैट, यू विल हैव टू कोरिलेट. तो फर्स्ट, 6th और 16 को छोड़ दो. 17 इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, है ना. उसके बाद ये 18, 4 क्वेश्चन हो गए अभी तक कॉम्प्लेक्स. 1, 6, 17, 18. 1, 4, 6, 17, 18. हाँ 17, 18.
क्योंकि 17 वही जो मैंने बताया आपको, who is the donor and this is the incentive based, 4 हो गया और 5, तो 5 क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था आपको, दैट इज 25%। तो नहीं, 2 हटा दो, पहले वाला वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, वो भी था। तो यू कैन इमेजिन कि अप्रॉक्स 25% क्वेश्चन, 30% क्वेश्चन इज इन सच ए मैनर कि दैट, हाँ गया गया, हाँ 40 to 65, तो 65 मीन्स 25 या 75, नियर अबाउट 25। और क्या? Better. But if you are not understanding that question in the right spirit, then your score will be 5 marks. Maximum 6-7 marks, not more than that. And if you are writing in the right spirit, then that will got 30-35, more than 35 also, because examiner will get impressed कि you are the right person for this country. You are accepting and you are understanding what is the demand of the questions and how you are differentiated from others. So that is the reality. Clear है? So 65, 35 you are absolutely right, and if you are not splitting then 5, the difference will become 25-30. But 25-30 marks in one subject, that is, can you imagine what is the difference? भयंकर यार, इट मीन्स 15%, 10 से 15% स्कोर, हाँ बोर्ड, हाँ हाँ टॉपर, बिकॉज 20-25 marks in each subject you are leading amongst others. So this is very, yes, so you will become toppers by getting such type of mentoring, such type of education system. Otherwise everybody is on the same pedestal. Or the question and problem pertaining to this coaching, in Delhi or anywhere else, because nobody is going to bother about what does it want to say. So this is to be closed, and after that the second phase will have started, just coming back after 2-3-5 minutes. तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।